देख सकते हैं कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खेल को देख रहे हैं। जो खेले वो खिले। इन दृश्यों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद, जो कि इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इस कुश्ती को देख रहे हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। खेलों को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से जोर रहा है और वो कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। आप देख रहे हैं उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से ये तस्वीरें, जहां कुश्ती के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और अब देख रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री ये चेस के खिलाड़ियों की मेज के पास पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर हमेशा से स्थानीय खेलों पर रहा है। उनका कहना है कि कुश्ती हो, कबड्डी हो, मलखम्ब हो, ऐसे वो देश के खेल जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे थे, उसकी तरफ खिलाड़ियों को आगे आने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक वातावरण तैयार किया। और आज हम देख रहे हैं कि हर खेल में देश के खिलाड़ी परचम लहरा रहे हैं, स्वर्ण पदक हासिल कर रहे हैं, कांस्य पदक हासिल करते हैं, सिल्वर मेडल जीत करके देश के लिए लाते हैं। देश का तिरंगा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े खेलों में हम देखते हैं कि ये खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ लहराते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान भी हमें इसमें देखने को मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को जिस तरह से उत्साह दिया, उन्होंने जिस तरह से खिलाड़ियों की तरफ सोचा, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए एक वातावरण तैयार कर दिया। और हम देख रहे हैं कि आज वाराणसी में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, उनका 2 दिवसीय ये दौरा है और उसी कड़ी में आज जहाँ उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और उसके बाद अब वो खिलाड़ियों के बीच पहुँचे थे और उन्होंने चेस हो, कबड्डी हो, सभी में खिलाड़ियों से बातचीत भी की और उनका उत्साह बढ़ाया। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों से भी मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात सुन रहे हैं और कितने ही उत्साह भरे ये पल होते हैं जब देश के प्रधान
खिलाड़ियों के बीच पहुंचते हैं, इन युवाओं के बीच पहुंचते हैं। तो तस्वीरों में अभी आप देख रहे थे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देश के युवा खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, उनके खेल को देख रहे थे, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो चेस हो। और ये जो देश के युवा हैं, जो देश के खिलाड़ी हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। In low power and portable applications, designing precision analog signal chains where board space is a premium can be challenging. Combining two functions in one tiny package can save space and simplify design. The ADR3625 is a low power, high precision voltage reference with excellent thermal performance. It can also act as a low dropout linear regulator for applications requiring ultra precise initial accuracy. Combining the high precision specifications of a voltage reference with the capability of sourcing 70 milliamps and sinking 20 milliamps enables a space-saving solution, delivering a precision voltage reference and LDO functionality in one package. Low quiescent and shutdown current makes it ideal for battery-powered portable devices and applications. And the ADR3625 is 1.8 volt logic compatible for use with low voltage converters and microcontrollers. For a precision voltage reference that can supply current like an LDO, pick the ADR3625. So we are going to have 7 temples here. In this area, just outside Perkota, there will be separate temples, not together. 7 separate temples will be built. कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आयरन कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आयरन की लाइफ जो है वो 94-95 ईयर्स होती है। हम तो 1000 ईयर्स का टेम्पल बना रहे हैं। 3500 लेबर इज वर्किंग डे एंड नाइट। पीपल ऑफ माई जनरेशन, इवन योर जनरेशन, यंगर जनरेशन, and many generations who have gone, they never ever thought that the Ram temple will be a reality. Not a single pie has come from any government agency for the construction of the temple. The first Land Acquisition Act, it was implemented with the advice, aid and advice of ministers and myself. But the beauty of this Prime Minister is, when I went to tell him that please do not issue the third ordinance on this matter, he looked at me. He said, "You are telling me?" Not even once he would use the word, "You guys are responsible." He takes the full responsibility for what happens. His speech on my farewell, I couldn't believe. I was in tears. The cabinet ministers and secretaries to the government who were invited, they couldn't believe. Prime Minister spoke for 45 minutes and he spoke only about me. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking, subscribing and sharing with people who you think will benefit from these conversations. My guest today has been entrusted with the task of completing the construction of the Ram Temple in Ayodhya. Mr. Narendra Mishra is one of the most experienced bureaucrats of our times. He was Principal Secretary in the Prime Minister's office from 2014 to 2019. In the second term of Prime Minister Modi, when Mr. Mishra asked that he be relieved of his duties in the PMO, the Prime Minister accepted his resignation and tweeted,
Nripendra Mishra is among the most outstanding officers who has a great grasp of public policy and administration. When I was new to Delhi in 2014, he taught me a lot and his guidance remains extremely valuable." Unquote. Mr. Mishra couldn't really hang up his boots because he was soon appointed as the chairman of the Executive Council of the Nehru Memorial Museum and Library, and then as chairman of the Ayodhya Ram Mandir Construction Committee. So let's get chatting with the man himself who's entrusted with this task. He has to complete the construction of the Ram Temple by January 2024. Mr. Mishra, thank you so much for being part of the podcast. I'm delighted that you could find the time and come to the studio here because I know that the deadlines are really sharp with the Pran Pratishtha to happen in January 2024. So I'm guessing that your work is like literally 24/7 to keep an eye on everything. But before I begin to ask you about the timelines and the construction process, one question which, for our overseas viewers and for our young viewers who are not very aware, would I say, of what it means to install